Hello, a very good morning to all of you. Good morning. Myself, Dr. Ekhlakh Ahmed, Associate Professor in the Faculty of Education, Engineering University, London. And I think you have learned a lot about research methodology. You have also learned about the meaning, concept, review literature, and other things related to research. I think research is a new concept for all disciplines. It may vary from one discipline to other discipline, but the concept is same. You search again and again to find something new. That is called research. And today, my topic is hypothesis. Anyone know about hypothesis? Any idea about hypothesis? Yes, please. Hypothesis means what the scholar assume on this point, or he or she is going to research. Assume he or she is going to research. Yes? Plan of work. Plan of work. Plan of work is not a hypothesis. So the hypothesis is the assumed result. Assume results. Probable. Maybe it may not be sector, maybe. Maybe हो सकता है. Yes. Maybe or may not. Yes, the null hypothesis being stated around the universe. So there are many types of hypothesis, and null hypothesis is one of them. Or people? Yes. So hypothesis is prediction. Prediction. Tentative prediction. Tentative prediction. That can be tested using investigation. Okay. I think this is the Ph.D. class, and I think interaction is more important. Yes. One way is not good teaching. The two way is the best teaching, in which your participation is more important. Okay? This is not a class of UG, PG. This is the Ph.D. class. Right? Yes. And I think that interaction is more important. So, everyone will participate in this lecture. ये मत सोचिए कि गलत है, ठीक है? It's okay. So, hypothesis is a probable answer of a problem. Or hypothesis is a tentative solution of a problem. If you want to go your home, there are many solutions to go your home. You may go with your own vehicle. You may go with private vehicles. You may go with car, taxis. There are so many solutions. Probable solution. You can think about it. Okay? So, I think there are other words also related to the hypothesis. Assumption is one of the words. Assumptions. And postulates is another word related to the hypothesis. Do you know about assumptions? Assumptions के बारे में किसी को आइडिया है?
assumptions are postulates, Postulation. What you assumptions. we understand this, but not exactly synonym enough. Okay. Like imagination. Imagination. It's not imagination. It is not imagination. You can assume. Yes sir, there like कि quite उसका एक example है कि अगर मैं उसको toss करती हूँ, at the acid count tell me Like probability. that probability. False belief. Yes. Or It's a false belief. false belief or Because guess. guess. There is a minor difference between assumptions and hypotheses. Minor difference. Hypothesis must be tested. Through But- scientific investigation. Yes, through scientific investigation. But it is not required to test assumptions. So assumption is something that you believe in your mind. Yes. It may not be. Like God is one. God is one. We all assume. There is no need to test that God is one or two. And postulates like A plus B is equal to B plus A. There are 9 postulates in mathematics. A into B is equal to B into A. It looks very easy, but it is very difficult to prove. A plus B is equal to B plus A. A plus bracket B plus C is equal to A plus B bracket close plus C. So it is the another thing. But hypothesis is a tentative assumptions or solution made in order to test its logical or empirical consideration. It is very important to test the hypothesis. Your hypothesis may be accepted or rejected or not accepted. If you frame in a hypothesis like there is no significant difference between male and female on privatization of higher education. There is no significant difference in between male and female students on privatization of higher education. It is a hypothesis, and you can test it with suitable statistical test. You may use t-test or another test. It depends on the nature of your data. But hypothesis must be tested. Without testing hypothesis, you cannot find your result, or you cannot decide, you cannot take decisions about anything. Sometimes you know the results, you know the findings, but you prepare your hypothesis in null form. जब तक किसी के बारे में या किसी भी हाइपोथेसिस के बारे में आप टेस्टिंग को कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते. यू कैन नॉट मेक एनी डिसीजन विदाउट टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस. और इसका बेस्ट एग्जांपल है कोर्ट. मैक्सिमम लोग जानते हैं कि ये अपराधी है, लेकिन डिसीजन कब होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल्स. सिमिलरली, फर्स्ट you test the hypothesis with suitable statistical test, then you can take decision. Okay, so the hypothesis
is derived from the Greek words hypothetically, meaning to put under or to suppose. I have already said that it may be or it may not. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. आपने हाइपोथेसिस ये बनाई कि मुझे यहाँ से अपनी गाड़ी से जाना है, ठीक है? ये आप यहाँ बैठे हुए बना रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी गाड़ी से जा भी पाएंगे या नहीं. जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते. आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ उसमें अभी तुरंत प्रॉब्लम आ जाए और आपकी गाड़ी खराब हो जाए. तो आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी? एक्सेप्ट नहीं हुई और आप अपनी गाड़ी से चले जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं. ठीक है? तो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, मे बी एक्सेप्टेड or may not be accepted. So the hypothesis is made up of two words, hypo and thesis, which means less than or less certain than a thesis or a statement. It is presumptive statement of the proposition or a reasonable guess. It may be or it may not, based upon the available evidences, based upon the data, informations which you collect at the time of data collections, which the researcher seeks to prove through his study or study. It is very important to take the data, to take the information, gather the information with appropriate tool, and then prepare a hypothesis. It is very important. Okay? And hypothesis will give a plausible explanation that will be tested. The tested is more important. With suitability statistical test. A hypothesis may seem contrary to the real situation. कोई जरूरी नहीं है कि जो रियल सिचुएशन है उसी को एक्सेप्ट किए, कोई जरूरी नहीं. Several times it may vary from the real situation. कोई जरूरी नहीं है कि जो रियल सिचुएशन हो वही आपकी हाइपोथेसिस में भी आए. Several times it may vary. 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो रिसर्च हुई है वो आप देखें कि वहां पे आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है, तो देयर इज नो नीड, कोई जरूरी नहीं है कि आज भी वो क्या हो, एक्सेप्ट. It varies from time to time. It varies from place to place also. कोई जरूरी नहीं कि यूएस में आपकी हाइपोथेसिस यदि नल है, एक्सेप्ट हुई है, तो यहाँ इंडिया में भी ऐसा. नॉर्थ ईस्ट में कोई हाइपोथेसिस आपने बनाई, वहां पे एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है, तो यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी हो जाए. ये कोई जरूरी नहीं. ठीक है? It varies from time to time. It varies from place to place also. It varies from generation to generation also. हम लोग की जनरेशन अलग है, आपकी जनरेशन अलग है. ठीक है? It may prove to correct or incorrect. Hypothesis need to be clear and precise and capable of being tested. Hypothesis must be precise, must be stated in clear statements. बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. There is no ambiguity. कोई ambiguity का वहां पे जगह नहीं. It is to be limited in scope and consistent with none or established facts. जो ऑलरेडी पहले से फैक्ट्स हैं, जो पहले से established theorem है, it must be based on the established theorem. It must be based on the previous statements, previous establishment of the theorem. Okay, and testing within the stipulated time. It needs to explain what is claimed to explain and should have empirical references also. Empirical, who जानता है? What do you mean by empirical experience? Quantitative. Empirical, quantitative अलग होता है थोड़ा. Empirical experiences are Qualitative. not qualitative. Empirical means first-hand experience. जो आपने खुद किया,
खुद पे जो एक्सपीरियंस किया, इट इज वेरी इजी टू से दैट कार ड्राइविंग इज वेरी इजी, बट है आसान है, कहना बहुत आसान है, ये कर देंगे। रोटी बनाना बहुत आसान है, बना देंगे। कितनी भी अच्छी बुक दे दी जाए संजीव कपूर की, लेकिन नहीं बना सकते। और जब बनाए रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल एक्सपीरियंस, जो खुद आपने लिया। कितनी भी अच्छी आपको बुक दे दी जाए रेसिपी की, नहीं बना सकते। ठीक है। And now the definition of hypothesis. Hypothesis can be defined as the tentative explanation of the research problem, a possible outcome of the research, or an educated guess about the research outcome. Okay, this is the basic definition. अब मैं ये दे दूंगा हाइपोथेसिस, फोटो रख लीजिए। जो समझ में नहीं आए आप डायरेक्ट भी हमसे पूछ लीजिए, ये आपको पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है। हाइपोथेसिस कैन बी डिफाइंड एज ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी आपके रिसर्च प्रॉब्लम है, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे रिसर्च प्रॉब्लम का एक ही हाइपोथेसिस बनाएं, उसके सब हाइपोथेसिस भी बनाएं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर डायमेंशंस ऑफ द रिसर्च, you may prepare several hypotheses. Okay, a possible outcome of the research हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन वो possible outcome or an educated guess. Educated guess means the hypothesis is based on the previous information. It is based on the previous theorems. It is based on the established facts. हम कुछ भी नहीं हाइपोथेसिस को बना सकते। ठीक है। It must be based on the previous theory. It must be based on the previous information. Okay. So it is educated guess about the research outcome. And one another definition by Good and Had, a proposition which can be put to test the determine its validity. A proposition which can be put to test to determine its validity. You know the term validity? Yes. What is validity? Yes, please. How genuine authentic it is. How genuine or authentic? It is. Okay. How long can something last? How long can something last? Okay. Anyone please? और भी बताइए। डरिए नहीं, बिल्कुल। क्लास में बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है। आप बोल सकते हो, मैं कुछ नहीं करने वाला, ये भी मैं बताऊँ। Every life having some validity. Yes. Every life having some validity. Every Life having. every line. Yeah. Accuracy. Accuracy. Accuracy is more. Accuracy is The consistency, sir. consistency is related to reliability. I think accuracy. It is applicable in real situation. Applicability. Or you can say how long it is applicable, or how long it Applicability. is relevant. Relevant. Till which time, till when it is relevant. Validity is called that a test or anything which fulfill its purpose. The purpose of a pen is, pen का purpose क्या है? लिखना. If a pen fulfill its purpose like writing,
You can say that this paper is valid or not. Legal term है, हर ये paper valid है. It means if a test fulfill its purpose, जो जिस purpose के लिए बनाया गया, यदि वो अपने purpose को fulfill कर रहा है तो क्या कहलाता है? कोई भी चीज. उसी तरीके से यहाँ पे क्या कहा गया है कि propositions which can be put to test to determine its validity, जो अपने validity को determine करे, that is called the hypothesis. सर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं till the time we can utilize. यूटिलाइज का मतलब भी वही है ना कि जो अपने पर्पस को फुलफिल करे. एक पेन है यदि वो चल नहीं रहा तो बेकार है, पर्पस ही नहीं उसका. एक सिंपल से निडल है, उसका पर्पस क्या है? यदि वो अपने पर्पस को कोई भी टेस्ट, स्पेशली वैलिडिटी इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ टेस्ट. ए टेस्ट इज वैलिड इफ इट्स फुलफिल इट्स पर्पस. एक टेस्ट बनाया गया मान लीजिए एटीट्यूड को मेजर करने के लिए, वो अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा. जिस पर्पस के लिए जो चीज बनाया गया, ठीक है, फुलफिल कर रहा है, इट इज वैलिड. ओके. And now the nature of hypothesis. And again, what is nature? नेचर किसे कहते हैं? नेचर कहते हैं इसका नेचर बहुत ऐसा है, ऐसा ऐसा. इनहेरेंट बिहेवियर, ठीक है. और यस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. जो जिसका नेचर है, इसका मतलब ये एक नेचुरल बिहेवियर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर चीज की. कहते हैं ना सांप को कितना भी दूध पिलाएंगे, जैसे मौका लगेगा वो, दैट इज द नेचर. कितनी भी मीठी दही हो, थोड़ी सी खट्टी जरूर रहेगी. क्यों? दैट इज द नेचर ऑफ गॉड. सो द नेचर ऑफ हाइपोथेसिस. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, बिकॉज हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव. Objective is define what you want to do. क्या करने वाले हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं. एंड हाइपोथेसिस कैसे उस ऑब्जेक्टिव, हाउ यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस वी अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स. हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे, हाउ यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव. ठीक है. सो इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स. आइडेंटिफाई द की ऑब्जेक्ट्स, concepts involved in the research. It is very important to know the key concept of the research. What you want to do in your research. There are many types of research, and the nature of research is different. Like experimental research is different from the descriptive research, historical research, ethnographic research, scientific research. They all are different. Okay, so you must know the key concepts of your research before preparing the hypothesis, and identify its relationship to both the problem statement and the literature review. Review of related literature is very important for any research, because unless you review your research, you review your literature, you cannot prepare your hypothesis, you cannot determine your objectives, design, etc. So review of related literature is very important before preparing your hypothesis or determining your objectives. A problem cannot be scientifically solved unless it is reduced to hypothesis form. Hypothesis especially we make in experimental research or in scientific research, in which
you can test your data in relation to your object. Okay? Yes, please. And hypothesis is a powerful tools of advancement of the knowledge consistent with the existing knowledge and conducive to further inquiry. Or you may say that it is a powerful tool of advancement of the knowledge. It works like a bridge in the previous knowledge, current knowledge, and the future knowledge. You can correlate the prior informations, prior knowledge with current knowledge and the future inquiry. It can be tested, verified or falsely. दोनों हो सकता है, ठीक है? Hypotheses are not moral or ethical questions. Okay? It is neither too specific nor too general. बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा जनरल भी नहीं होना चाहिए. But it must be specific to your problem. It must be clear. जो भी आप बनाए बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में हो, स्पेसिफिक हो, पहले से ही पता चले कि इसमें क्या करने वाला है. ठीक है? It is the prediction of the consequences and it is considered valuable event if proven false. कई बार ऐसा होता है कि हाइपोथेसिस जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है. आगे मैं चल के आपको बताता हूँ. अपने एक कहा जाए कि अपनी मर्जी का रिजल्ट निकालने के लिए कई बार हम लोग हाइपोथेसिस को जो टेस्ट करते हैं उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बढ़ा के हम लोग अपने मर्जी का रिजल्ट हम लोग चाहते हैं. ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो भी आपको आगे बताएंगे. तो ऐसा नहीं है, ठीक है? केवल आप जो रियल डेटा है उसी को टेस्ट करें और उसी पे अपने फाइंडिंग्स को निकालें. ओके? And now, how you formulate your hypothesis? A hypothesis is formulated after the problem has been stated and the literature study has been completed. You can formulate your hypothesis after the problem is stated, or the identification of the problem, and after completion of your review of related literature. Without problem stated or without knowing the everything about your problem, you cannot formulate your hypothesis. And review of related literature is very helpful in formulating your hypothesis. Because review of related literature is very important to know the other works, how they work with these variables which is going to use by you. How they design their study, what were the tools used, what were the statistical techniques they used in interpretation or in analysis of the data, or how they concludes their results. If you review maximum of your subjects or of your area, it is very helpful because this is the beginning of the research. सबसे पहले ये कहा जाता है कि रिव्यू को आप करें. 6 महीने या साल में आपको इसीलिए दिया जाता है कि जो भी रिलेटेड रिव्यूज हैं, इंडिया के हैं, बाहर के हैं, दुनिया में कहीं भी रिव्यू करते हैं, आप उनको रिव्यू करें. जितना ही आप रिव्यू करते हैं कहीं आपके लिए बेहतर है. आपका माइंड एक्सप्लोर होगा कि दूसरे लोगों ने इसे कैसे काम किया.
ठीक है? And it is formulated when the researcher is totally aware of the theoretical and empirical background of the problem. Again, जो भी आपकी प्रॉब्लम है जिस पे आप रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट you proper investigate or you proper study about your problem, its dimensions and background of your study. It is more important. सब कुछ जानिए अपने स्टडी के बारे में। ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च किया और 4 साल के बाद थीसिस बन गई, अवार्ड हुई और अमेरिका में रख गई। रिसर्च का ये पर्पस नहीं है to just to take your degree, ये पर्पस नहीं है। ये आए 3 साल यूनिवर्सिटी में काम किया, डिग्री मिल गई, पीएचडी अवार्ड हो गई, घर चले गए। आपके थीसिस को कोई देखेगा नहीं, लेकिन ये वैल्यूएबल है तो पूरी दुनिया उसको पढ़ेगी, पूरी दुनिया। अभी थीसिस को क्या किया जा रहा है, सीधे वेबसाइट पे डाल दिया जाता है, कहीं से कोई भी एक्सेस कर सकता है। आपकी थीसिस पूरी दुनिया में पढ़ी जाएगी इफ इट इज रिलेवेंट, वैल्यूएबल होगी, पूरी दुनिया के लोग उसको पढ़ेंगे, वोट करेंगे, रेफरेंस करेंगे, ठीक है? And now the purpose and functions of an hypothesis. ये hypothesis इसका purpose क्या है, functions क्या है hypothesis का? Like it offers explanation for the relationship between the variables that can be empirically tested. You know the association or the relationship between the variables which is used in your research, and it can be empirically tested. It means you can test the relationship of variables with the help of your data, with the help of your information which you have collected at the time of your research. Okay? And analysis proves that researcher has sufficient background knowledge to enable him or her to make solutions in order to understand existing knowledge. It is very important to know the existing knowledge about your area, and you can correlate the previous knowledge, previous information with the current knowledge or the knowledge related to your area, related to your subjects, and it gives direction to an investigation. It gives direction. If you don't know where you are going, you never reach anywhere. आप अपने घर से निकलिए, आपको पता नहीं कि जाना कहाँ है, कहाँ जाएंगे। So the direction is more important. If you know your direction, correct direction, then it is very easy for your research. And if you know that the hypothesis gives the right direction for your investigation or for your research, and it structures the next phase in the investigations, and therefore furnishes continuity to the examination of the problem. It means it helps a lot in the investigations or in examination of a problem, and it gives the right direction for your research. Okay? And now the characteristics of an hypothesis. Again, characteristics, it should be elucidating power. It should strive to furnish an acceptable explanation of the phenomena. It must be verifiable. It must be formulated in simple and understandable terms, clear terms. It should correspond with existing knowledge. It is more important. कोई imagination नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं और सोच लिया कि कोई गाड़ी आएगी, सीधे मुझे यहाँ से लेगी और मेरे घर पे ले जाके छोड़ देगी। ऐसा हो सकता है? ये इमेजिन हम कर सकते हैं, हाइपोथेसिस नहीं बना सकते। कि कोई गाड़ी आएगी और मुझे यहाँ से लेगी,
सीधे मेरे घर ले जाके मेरे बेडरूम में डाल दे, ऐसा है। तो आपको हाइपोथेसिस भी जो फॉर्मुलेट करना है, कैसे करना है, इट मस्ट बी रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, जो कोरिलेट कर सकते हैं, जो अवेलेबल है, जो पॉसिबल है, क्योंकि you want to test the empirical experiences, you want to test the data। हवा में नहीं कोई चीज है कि आए और ये कर दिया और ये कर दिया, ऐसा नहीं। If you have the data, then you want to test them. Okay? And now the types of hypothesis. First is descriptive hypothesis, in which we describe the characteristics like size, form, or the distribution of a variable. Like if you want to test the relationship between intelligence and your achievement, there are two variables. One is intelligence and another is achievement. Is there any relationship in intelligence and achievement? Then you can characterize, you can divide the intelligence of, you know that there are several types of intelligence, there are several category of intelligence, normal, moral, imbecile, idiot, बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, यू कैन कैटेगराइज द अचीवमेंट आल्सो, एवरेज, above average, low. Okay, so this is called the descriptive type of hypothesis, in which you can describe the on the basis of size or distribution or the category of the variable, and the variable may be an objects, persons, organizations. Like there are 3 or 4 types of university category. One is central university, state university, deemed university, private university. There are categories, so you can categorize. Okay, and the rate of unemployment, it is also a category among arts and other stream students. Like the rate of unemployment among arts graduates is higher than of the commerce student. You can compare, you can formulate your hypothesis that there is a significant difference in unemployment of the arts students and the science students. Or you can formulate your hypothesis that there is no significant difference in unemployment of the different discipline students. And you can take the students of different discipline like medicine, engineering, arts, science, commerce, agriculture. And you can gather the data and analyze the data or analyze the information. And this is the relational hypothesis. Like there is no relationship between your motivation and your achievement. You can state the hypothesis, you can formulate your hypothesis in relational ways. Like there is no relationship between your motivation and your achievement. There are 2 variables and you can correlate. Okay. Families with high income spend more for recreation. Okay. This is also a relational hypothesis in which you can correlate or you can see the relationship in 2 or more variables. Okay. Upper class people have fewer children than the lower class people. It is also a type of relational hypothesis. A hypothesis in which you can compare in different types of variables or different category of the variables. Like
your achievement depends on several factors like your SES, socioeconomic status, your motivation, your home environment, your teacher, your university or college. आपका अचीवमेंट जो दिखता है कि हमारे 80% आए हैं, 70% आए हैं, 90% आए हैं, आपने कभी सोचा है इसमें कितने सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? There are several factors which affects your achievements. Your parenting, your environment at home, your school or college environment, your self motivation. बच्चे को कहा जाता है कि आज एक चॉकलेट मिलेगी तो क्या करता है? पूरी एक पोयम याद कर देता है। क्यों? An external motivation is there that if you learn a poem, I will give you a chocolate. मैं भी आपसे कहूँ, if you talk in your discipline, then I will give you a new bike. दूंगा नहीं, मेरे पास नहीं है। क्या है? That is external motivation. खुद आप मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे देयर आर सेवरल फैक्टर्स। आप ये मत सोचिए कि आपने जो 90% लाए हैं, 80% लाए हैं, केवल आपकी वजह से आया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स, देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट achievement. So you can correlate all those factors with your achievements. Okay, so this is the relational hypothesis in which you can correlate the several factors, several variables with one variable, or you can see the effect of several variables on one variable. Okay, and this is the other type of hypothesis, causal hypothesis. Like it states that the existence of a change in one variable causes or lead to an effect on another variable. If I say that your coaching leads to your academic performance, ठीक है? If I divide this class into two groups, and one group is given the special treatment and another group is given the normal treatment, then you can say that your achievement is affected by the special treatment. Okay, so this is the causal hypothesis in which you can see the effect of any special treatment on any other variables or your achievement or any other variable. The first variable is called the independent, this type of hypothesis, and another variable is called the independent variable. Like your achievement is affected by your SES, your school environment. Okay, so this type of hypothesis is called the causal hypothesis, in which your achievement is called the dependent variable, and other factors which affect your achievements, that is called the independent variable, like your motivation, your SES, your style of learning, your studying habits. Okay. When dealing with causal relationships between the variables, and researcher must consider the direction in which such relationship flow. जो डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, जो डायरेक्शन पे आप रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, उसको आप ध्यान रखें. ओके, and this is the working hypothesis. While planning the study of the problem, hypotheses are formed. Initially they may be very specific. In such cases they are referred to as a working hypothesis, which are subject to modifications as the investigation process. कई बार ऐसा होता है कि हमने जो इनिशियल स्टेज पे हाइपोथेसिस बनाई, इट नीड्स टू बी मॉडिफाइड. कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने पहले बना दिया है लास्ट तक वही रहेगा. कई बार
need होती है उसको modify करने की. According to your situations, according to your need, you can modify your hypothesis. According to your need, according to immediate effects, you can modify your hypothesis also. So it is called the working hypothesis. And the most important, which is very much used in especially social sciences research and scientific research also, that is called the null hypothesis, in which we prepare the formulate the hypothesis in null form. Like there is no significant difference in boys and girls on ICT used in education. There are two groups. One is boys and another is girls. And the dependent variables are the variables on which we want to data. That is ICT. Okay. There is no significant difference. It means boys and girls. Previously, I said that जब तक कोई एविडेंसेस आपके पास नहीं है, टेस्ट जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी एक डायरेक्शन में मत जाइए, नल फॉर्म में नहीं. ठीक है, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कोर्ट का. सब कुछ मालूम होने के बाद भी कोर्ट डिसीजन कब देता है? जब पूरे एविडेंसेस उसके पास आ गए. सिमिलरली, we can formulate our research hypothesis in null form, in which there is no significant difference, statistically significant, not significant difference, because the testing is with the help of statistical tests like parametric test, non-parametric test. There are several tests which is used in testing the hypothesis. Yes, come. So the this type of hypothesis are formulated for testing statistical significance. Since this form is a convenient approach to statistical analysis, and the test would nullify the null hypothesis. For example, there is relationship between a family's income and expenditure on recreations. A null hypothesis may state that there is no relationship between the family's income level and expenditure on recreation. There are two types of hypothesis. One is directional and another is null hypothesis. You can formulate your hypothesis in directional form also. Like there is a relationship. You can state also that a relationship between the family income and the expenditure on recreation. But in the null form, you may formulate your hypothesis that there is no relationship between the family's income level and the expenditure on recreation. And in most of the behavioral sciences and scientific research also, we are using the null form. And on the basis of your analysis, the data, you can accept or reject your hypothesis. If the hypothesis is statistically accepted, then you can say that there is no relationship, and if your hypothesis is statistically rejected, then you can say that there is a relationship. But Okay. sir, there is this saying that says no hypothesis is an hypothesis that was formulated with the intention of rejection. Not intentionally. We can formulate the hypothesis in null form. That is, we are knowing nothing until or unless your hypothesis is tested. Yes. Yes. There is no relationship means we nothing. We know nothing until or unless your results or your data is not analyzed. जब तक आपके पास डेटा एनालाइज नहीं हो, तब तक यू कैन नॉट से एनीथिंग. हम कैसे कह देंगे कि रिलेशनशिप है या नहीं? If you have a strong relationship or a strong background of the your problem, then you can say, you can formulate the hypothesis in
directional form also. But in the most of the cases, we are using the null form, in which until or unless you can test the hypothesis, you test the data with the statistical tools, with statistical test, appropriate test, then we can say, then we can conclude that there is a relationship or not. जब तक हमारे पास स्टैटिस्टिकली प्रूफ नहीं हो जाता, आपके पास सिंपल सा एक एग्जांपल मैं बताऊं, इफ यू हैव ए पीस ऑफ गोल्ड, ठीक है, आपके पास एक छोटा सा गोल्ड का पीस है, हम लोग नहीं जानते उसके बारे में, तो कैसे कह देंगे कि 24 कैरेट का है, 23 कैरेट का है, कितने का है, उसकी वैल्यू वी कैन नॉट डिसाइड। और जब उसको हम टेस्ट करा लेंगे कि किस कैरेट का है, 24 का है, 23 का है, जो भी हो, विद किससे, ऐसा नहीं कि हम इनसे कह देंगे ये हो जाएगा, नहीं, विद जो उसके लिए अप्रोप्रिएट लोग हैं, जो उसके लिए टेस्टिंग लैब है, then we can decide that this part of gold is 23 carats or 24 carats. तभी तो हम कह पाएंगे, जब तक हम उसकी टेस्टिंग अप्रोप्रिएटली नहीं करा पाएंगे। तो हाइपोथेसिस में यही है कि जब तक हमारे पास डेटा का टेस्टिंग नहीं होता है, वो भी किससे, अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट से, तब तक we cannot decide, we cannot say that there is a relationship or not. Okay? And this is the statistical hypothesis. These are the statement about the statistical populations. This is the derived from a sample. These are the quantitative measures, and they are numerically measurable. Like group A is older than B. यह पहले से आपके पास यदि इंफॉर्मेशन है, तो आप इस टाइप की हाइपोथेसिस बना सकते हैं. You can formulate the hypothesis like this: if you have strong, or if you have the more informations, you have the more knowledge, theoretical knowledge about the problem. आपके पास यदि पहले से है, बहुत अच्छा है, तो आप बना सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं अभी बार बार एग्जाम में आता है कि गर्ल्स ने टॉप कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज. यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, बट अवॉइड दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन को टेस्ट नहीं करता. लेकिन आपके पास यदि इंफॉर्मेशन है, वैलिड इंफॉर्मेशन, थ्योरेटिकल नॉलेज है, then you can say, you can formulate hypothesis in the directional form. सर ऑब्जर्वेशन की टाइप पे नहीं करना, ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन अलग, ऑब्जर्वेशन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मैं ऑब्जर्व करूंगा, आप ऑब्जर्व करेंगे, तीसरा ऑब्जर्व करेगा, सभी के ऑब्जर्वेशन में क्या है, वेरिएशंस है. अगर एक सैंपल साइज ऑब्जर्वेशन लेके उसको करते हैं, सैंपल साइज का ऑब्जर्वेशन लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपने टूल क्या यूज किया, और टूल भी यूज किया है तो जो आपके पास जो सैंपल है, ये सैंपल इज एप्रोप्रिएट अबाउट, सैंपल किया जा सकता है. सैंपल भी आपने कैसे लिया, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सैंपल. प्रोबेबिलिटी लिया, नॉन प्रोबेबिलिटी लिया, प्रोबेबिलिटी में भी कौन सा लिया, आपने कहा सिंपल रैंडम लिया. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक द इंफॉर्मेशन, टू टेक द डेटा फ्रॉम द सिंपल रैंडम सैंपल. बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल. ठीक है, और इज एनी क्वेरी? No, sir, my understanding of Hindi is very bad. So actually, I need more clarification on this statistical hypothesis. Group A older than group B, is it directional? Yes, directional. If you have the information, you have the theoretical knowledge about your problem, then you can state your hypothesis like this type. If there is a group of older people and there is a group of younger people, you can say that the older people are more experienced than the younger people. Then what will be the alternative? Alternative, it may be that there is no difference in intelligence of the older people, older group and the younger group. So since you have background of the null hypothesis, If you have background knowledge, you have the background knowledge, if you have the much theoretical knowledge, then you can
formulate this type of hypothesis. Yes, you Then can if, say. if in this case you do not reject, then what is the purpose of that? It is the other purpose. Hypothesis is rejected or accepted, but you can formulate the hypothesis in this form. Okay. It is based on your data. It is based on the information which you collect at the time of research, and then you can use the appropriate statistics to accept that. Okay. Okay. And this is the common things which is related to the hypothesis. Conceptual clarity, specification, testability, availability of the techniques, theoretical relevance, consistency, objectivity, and simplicity. This is the common characteristics of hypothesis. And now the sources of hypothesis. What are the different sources from you can formulate your hypothesis? There are different sources like theory. There are different theory related to your area, related to your subjects, related to your Ph.D. area. So you must have the knowledge about the theory on which you are going to conduct research. Observation is also a part. Analogies, similarities, analogies, intuitions and personal experiences. It may be an area of your source of your hypothesis. Findings of the studies. It is related to the previous review of related literature. And state of knowledge, culture, and continuity of research. These are the different sources which can be helpful in formulating the hypothesis. But the theory, findings of the studies, continuity of research are more important. If you have the knowledge about your area, about your subjects, about your subject of your PhD or your research, so it is very helpful. If you done ample of research, previous research, and it will be very helpful in designing your research, formulating your hypothesis, and now the hypothesis testing. How you test your hypothesis? Or how you test the data on the basis of hypothesis? So there are some terms like level of significance. It is important that on which level you decide that your hypothesis is accepted or not. There are especially several level of significance, but we are using mostly two types of level of significance, 0.05 and 0.01. 0.05 means 95% of the cases, if your hypothesis accept or reject, only 5% cases go beyond. And if we are using 0.01%, 0.01 level of significance, it means 99% of cases accepted or rejected, only 1% cases go beyond. केवल 1% केसेस में हाइपोथेसिस यदि एक्सेप्ट हो रही है तो रिजेक्ट हो जाएगी और रिजेक्ट हो रही है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। और वहां पे क्या है 5% केसेस, बिकॉज वी हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, वी आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर इज नो 100% results, especially in behavioral sciences. We cannot say that significant difference in male and female or rural and urban students are 100%. कभी हम नहीं कह सकते कि जो रिजल्ट आ रहा है वो 100% बिल्कुल सही है, आपकी हाइपोथेसिस सही है, रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है. We cannot say at 100%. So level of significance is used 0.1, 0.01 and 0.05.
0.01 means 99% your cases accepted or rejected. 1% case go beyond, and 90.05 means 95% cases rejected or accepted according to hypothesis, and 1%, 5% go beyond. Okay. There are some criteria for rejecting or accepting the hypothesis. Sometimes the null hypothesis is rejected only when the quantity of the outcomes is so large, or the probability of its having occurred by mere chance is 1 times out of 100. हम लोगों ने जो पहले बात करी 0.01 की और 0.05 की, इसके बेसिस पे, on the basis of these level of significance 0.01 and 0.05, we can accept or reject our null hypothesis. ठीक है? These are the certain criteria on the basis we can reject or accept our null hypothesis. Okay? And now, 210 and 110 test. Anyone know 210 and 110? Significance when? Level of significance. Level of significance. There are 2 types of level of significance used in especially behavioral sciences: 0.05 and 0.01. 0.05 means 95% of the cases accept or reject. Only 5% cases go beyond. 95% केस में यदि आपका एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा तो वही रहेगा. 5% केसेस में उसके बियॉन्ड जा सकता है. यदि एक्सेप्ट हो रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो रहा है, because they are conducting the research on the human being. And 0.01 means 99% केसेस में आपका जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, वो वही रहेगा. 1% केसेस में क्या हो सकता है, इसके बियॉन्ड जा सकता है. So 0.05 है तो null hypothesis accept. Null hypothesis की मैं बात कर रहा हूँ. So H H0 null hypothesis. H0 is null hypothesis. It is a symbol. H0 is a symbol. और कुछ नहीं. 0.5 है तो null hypothesis accept होगी. 0.5 और 0.1 दो क्राइटेरिया है. ठीक है? जैसे मान लिया कि मैंने कहा कि मेरी हाइट है नॉर्मल. कैसे मैंने कह दिया? देयर आर सम पैरामीटर्स. कोई पैरामीटर होगा तभी तो हमने कंपेयर किया है और फिर हमने कहा कि मेरी हाइट नॉर्मल है. उसी तरह से ये पैरामीटर्स. जब आप टेस्ट की बात करेंगे, जब आप हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे, तो सारे टेस्ट के लिए 0.05 पे 0.01 पे न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई. वो पैरामीटर्स, उससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा. आप यदि टी टेस्ट यूज कर रहे हैं तो 0.05 के लिए 1.96 जो है पैरामीटर है. 0.01 के लिए 2.58 पैरामीटर है. उससे ज्यादा आता है तो हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, कम आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगी. दीज आर द पैरामीटर्स फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस. ठीक है? हर चीज के लिए पैरामीटर्स या क्राइटेरिया बनाए गए. इसमें मैंने कहा मेरी हाइट नॉर्मल है. कैसे मैंने कह दिया? आपने देखे होंगे जितने भी लैब के टेस्ट आते हैं, टेस्ट की रिपोर्ट्स आती है. मान लिया ब्लड शुगर का आपका टेस्ट है और रिपोर्ट आपने दिया, तो जो आपकी एक्चुअल रिपोर्ट है, टेस्ट का जो डिजिट है वो एक जगह रहता है, उसके आगे वो नॉर्मल वैल्यू देते हैं. एंड देन यू कैन कंपेयर द योर रिजल्ट्स विद नॉर्मल एंड देन यू डिसाइड दैट यू आर डायबिटिक और नॉट. यही तो करते हैं. तो वही चीज वहां पे भी है. देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, on the basis of those parameters you can decide that your hypothesis is accepted. ठीक है? सर जो p वैल्यू भी p प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है. प्रोबेबिलिटी वैल्यू का भी यही है. आपकी हाइपोथेसिस का 99% यदि प्रोबेबिलिटी है या 1%, वो जस्ट अपोजिट ही है. जैसे आपने क्वाइन किया तो कितनी बार वो हेड आएगा, कितनी बार टेल आएगा, ये जस्ट p वैल्यू है, t है, इनोवा है, ये जितने भी वैल्यूज है ना, ये जस्ट पैरामीटर्स है, क्राइटेरिया
पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट हाइपोथेसिस। दीज आर द पैरामीटर्स। ये वैल्यू ज्यादातर मेडिकल साइंसेज में यूज होती है, और टी है, एनोवा है, और भी बहुत सारी वैल्यू अलग अलग बिहेवियरल साइंसेज में हम यूज करते हैं। टी वैल्यू वैसे आजकल बहुत ज्यादा यूज की जा रही है, मेडिकल साइंस पहले से यूज की जाती है, आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन है वो पैरामीटर, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस पे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, और कोई क्वेरी किसी की? बीच में आप पूछ सकते हैं, मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा। कुछ और देख, हाँ, 2 टेल और 1 टेल देखिए मैं means significance जो difference है वो two variable groups में differences आ सकते हैं। और 1 टेल 1 टेल में सर एक ही डायरेक्शन में हम होंगे, मतलब वेरिएबल्स में डिफरेंसेस नहीं होंगे, एक ही डायरेक्शन। और कोई बता सकते हैं? 2 टेल and 1 टेल test. 2 टेल, Yes. the test normally we used to do it on a normal curve, Yes. and Normal. the normal curve has 2 sides of the mean. Yes. So when the null hypothesis states that a so-so parameter equal to so-so parameter, we have 2 tails because it can fall on the positive side or the negative side. Negative. So, but when we have a situation where we have this less than this or this greater than this, that is more than or less smaller than, then we are going to have one direction. So when we have one direction, we have one tail. That is 1 टेल. Yes. Good. Very And good. when we have 2 directions, we have 2 tails. Good. In behavioral sciences or in nature, you can see that most of the attributes, most of the characteristics as according to the NPC. Our most of the characteristics, most of the attributes are according to the NPC, normal probability curve, in which our 100% is divided into NPC curve. It means 50% our data exists in the right side of the curve, and 50% data exists at the left side of the curve. If your data is according to the NPC, then it is 2 tail curve. There are 2 tails, but the NPC is asymptotic curve in which the ends of the curve never meets x-axis. कभी भी x-axis पे नहीं meet करते. And when your data deviated, like if your data more than 60% or more than 50% exists in one side of the curve, that is called 1 tail. But in normal probability curve, NPC, 50% of the data exists in the right side of the curve and 50% data exists in the left side of the curve, and it is called a 2 tail curve. Okay? The parametric value are the specific value in 2 tail curve, and 1 tail curve is different, on which we compare our results. दोनों के लिए अलग अलग है, कभी भी 2 टेल के लिए 1 टेल के लिए कंपेयर मत करिएगा, ठीक है? 2 टेल के लिए आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट की वैल्यू देखेंगे तो अलग है 1 टेल के लिए, ठीक है? यही है आपका 1 टेल एंड 2 टेल का. And there are errors in hypothesis, testing the hypothesis. The null hypothesis except if it is true, but according to your convenience, if you reject the null hypothesis, it is called the alpha error or the type 1. If your hypothesis is true, accept null hypothesis की बात हो रही, but according to your convenience, you reject the hypothesis, then it is called the alpha error or type 1 error. And if your hypothesis false or accept null hypothesis, okay, that is called type 2. आपकी hypothesis सही है, accept हो रही है, आप जबरदस्ती उसको रिजेक्ट करा रहे हैं, type 1.
ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट है, एक्सेप्ट कराना टाइप, बीटा भी कहते हैं इसको, टाइप 1 है टाइप। एंड दिस इज द लास्ट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, not query, sir, but clarification. यस, Type 1 error. Type 1 error, is it when you are supposed to accept and Yes. you reject, then you commit type 1 error? टाइप 1, यस, And when you are supposed to reject and you accept, this is type 2 error, right? टाइप 2। If you have any query related to the hypothesis, you can ask. डरिए नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में यहाँ से कम आपके तरफ से ज्यादा आना चाहिए। जो टीचिंग है वो वन वे ना होके टू वे होना चाहिए। यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ पीएचडी, बहुत सारे टीचर भी होंगे कहीं ना कहीं, बहुत सारे फैकल्टी भी होंगे कहीं ना कहीं, तो डरिए नहीं, घबराइए। ये तो जस्ट सिंपल पीपीटी बनाना है तो बना दिया। So, sir, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। If you have the knowledge, then no, yes. key value, please. Yeah. Key value. You did not talk about key value. P value. Yes. P value is also a criteria on which you can accept or reject your hypothesis. This is the criteria Okay. on which you can accept or reject your hypothesis. This is the numeric value. This is the numeric value. If your result is less than 0.05 and your result is more than 0.05, there are two values. Okay. ठीक है। Sir, right tail test क्या right tail test राइट टेल में, जहाँ पे राइट में ज्यादा आपके पास डेटा, तो क्या होगा कि वो एक तरफ ज्यादा जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल में ये है, जैसे हम ये कहें कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं फल यहीं पे जितने सारे यहीं पे जितने भी आप 100 के आसपास हैं, मैं ये कहूँ कि सबका आईक्यू जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, प्लीज नो टॉकिंग प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क। आपस में कोई बात नहीं, अभी लंच होगा उसके बाद खूब बातें करेंगे, अभी नहीं प्लीज। आप बड़े हो गए हैं, मुझे कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मैं भी कभी आपके जैसे स्टूडेंट था, लेकिन हम लोग को मौका नहीं मिला ऐसे पढ़ने का। यस प्लीज। अभी क्या हाँ यस, आपका डेटा यदि राइट में ज्यादा सिचुएटेड होगा, अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, आप यहाँ पे बैठे हैं और द आईक्यू जितने भी आप लोग बैठे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि एनपीसी के कारण जो आईक्यू इज अकॉर्डिंग टू द एनपीसी, लेकिन किसी वजह से अब इसमें होगा क्या कि 50% केसेस में राइट में होगा, 50% केसेस में नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द आईक्यू, योर आईक्यू इज रिलेटेड टू 1 सिग्मा राइट एंड 1 सिग्मा लेफ्ट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 68.26% नॉर्मल होगा। उसके ऊपर कुछ लोगों का होगा, उसके नीचे होगा, लेकिन किसी वजह से डेविएट होगा। मानिए 60% लोगों का नॉर्मल से या सॉरी आपका सेंटर से राइट में चला जाए तो वो पॉजिटिव होगा, और किसी वजह से लेफ्ट में चला जाए, निगेटिव में चला जाए। हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि आपका आईक्यू एनपीसी पे कार्ड है, लेकिन हो भी सकता है, वो भी हो सकता है। तो जब राइट में चला जाता है तो राइट पे ज्यादा से स्ट्रेट हो जाते हैं, 50% से ज्यादा, कई बार लेफ्ट में से। तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, हाँ। और उस पे अगर जो डेटा है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, तो उसको हम राइट टेल टेस्ट की तरफ, तो वो ज्यादा हो जाएगा ना, वो नॉर्मल फिर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आइटम है, जो आपने क्वेश्चंस बनाया है, तो वो ठीक नहीं है। हमेशा जो क्वेश्चंस बनाने चाहिए वो मॉडरेट डिफिकल्टी वैल्यू पे बनाने चाहिए। मॉडरेट का मतलब क्या है कि आधे लोग उसको कर पाए और आधे लोग ना कर पाए। और मैं उसका पॉइंट बताता हूँ, 0.5, यानी 50% जो उसको लोग कर पाए और 50% लोग ना कर पाए। 50 into 50 देख लीजिए, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जो इतना ज्यादा है।
15 into 50 क्या होगा 2500। कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिए, नहीं हो। जो जब कंपटीशंस के क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें डिफिकल्टी पहले भी ध्यान दिया। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं ना, पहले से तय होता है कि 5 लाख बच्चों ने एग्जाम में फॉर्म भरा है, हमें इतने ही बच्चों को देना, तो हम क्या करते हैं डिफिकल्टी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। ठीक है, वो बहुत उसकी प्रोसेस है, वो कभी टाइम लगेगा तो आपको बता। एमपीसी में 50 राइट और 50 वर्ड्स का बाइफरकेशन है, तो वो 1 टेल में आएगा या 2 वो तो 2 टेल में आएगा, वो तो एमपीसी को फॉलो कर रहा है। बट टेस्ट में इसमें एग्जैक्टली करते क्या है? किसमें एमपीसी? देखिए एमपीसी रियल में कोई कर्व है नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल कर्व है, हम लोगों ने मान लिया है, रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल कर्व है, हम ये मानते हैं कि दुनिया में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब एमपीसी के कारण होगा नहीं होगा, ये जब डेटा हमारे पास आएगा तो हम टेस्ट करेंगे। इसीलिए किसी भी रिसर्च का जब डेटा आ जाता है तो सबसे पहले यू हैव टू टेस्ट द नॉर्मलिटी ऑफ द डेटा। If your data is normal, then you are using parametric test, and if your data is not normal, then you are using non-parametric test. There are 2 types of tests. Parametric test, like if you are going to compare in 2 groups T, and if you are going to compare more than 2, it is used ANOVA. उसके बाद एक और है इनको, वो भी होगा। And if your data is not MPC, is not follow the MPC, then you are going to use non-parametric test, in which guide test, mean test, Mann-Whitney test, sign test, बहुत सारे टेस्ट हैं, Kruskal Wallis test, बहुत सारे टेस्ट। बट हर एक टेस्ट की कंडीशंस है, ऐसा नहीं कि आप बंद करके जो चाहे वो लगा दो, ऐसा नहीं। Every test has its unique conditions। कोरिलेशन है, बहुत तरह के कोरिलेशन है, कहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट मोमेंट है, फाई है, बहुत सारे हैं। लेकिन हर एक टेस्ट का एक यूनिक कंडीशंस है, उसी कंडीशंस को जब आपका डेटा फॉलो करेगा तभी आप लगा सकते, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज। ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट है कुछ भी पत्तियां लगाते हैं, एवरी टेस्ट हैज इट्स यूनिक कंडीशंस। और कुछ अटेंडेंस की कोई शायद फाइल सबने कर दी, 1-2 लोग पीछे शायद कर दीजिए आप। ये पीछे बैठे हैं, आप लोगों को समझ में आया कुछ? नहीं आया? पीछे सबसे जो बैठे हैं बात क्या है? थोड़ा सा पढ़िए घर पे, सब कुछ आ जाएगा। ये चूंकि कॉमन पेपर हो रहे हैं, इसीलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम एप्लीकेबल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है किसी पेपर में ज्यादा ही हो, किसी ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Father is here, we are doing the